So this is a gas system. Gas are used basically in almost every vehicles in our every vehicle that we use like cycles, cars. It through gas we can What gas? I'm hearing this word for the first time. yeah. I'm telling that. Acha. So gears are like wheels. So gears are like wheels with teeth, and through one gear, if we connect another gear, we can move the another gear through the if we are connected, so the other gear will also move like this, and so it's Gears are basically transferring the motion. yes, absolutely. So when the driving, so the gear that we are moving is called the driving gear, and the gear that has been moved through the driving gear is called the driven gear. So when the driving gear is moving the driven gear, this process is known as the transfer of motion in gears. Through gears, now, if we move the driving gear in this direction and we move the driven gear in this direction, so like if this driving gear is moving in this direction, the driven gear will move in the opposite direction. But in vehicles, we need to move the gears in same direction. So we put a chain to force the driven gear to move in the same direction as the driving gear. And बनाओ ढंग से चेन बनाओ properly so that they can see. Pick a red pen. Red pen से बनाओ chain. like this. Another way to move these two gears in the same direction can be we add one more gear between them. We add one more gear between them, that also helps the driving gear and the driven gear to move in the same direction. Did you guys understand the same direction and opposite direction thing? So through Let it speak now. through gears, we can even make the vehicle go slower or faster. We can control the speed of the gears. Just pause. Take the blue one. नीला सब में डाल के जाना. So if suppose this is a smaller gear and this is a little bigger one, and this gives the driving gear, and this is the driven gear. So if suppose this one is moving one round in 1 minute. So because this its circumference is greater Are you than connecting it with belt or directly? like directly, I haven't able to show. That's And one condition for the gear is that the teeth size should be same, or else they won't fit into each other and will not be connected. Like this one has same teeth size, though it's getting connected. But if they have different teeth size, maybe yeah, we can connect it with a chain. So now I'll tell you. So this is moving one round in 1 minute. So this will only move half round or some we it will depend the movement of this in position like in the length of its circumference. So if suppose it's moving half round in 1 minute. Why would it move lesser? Because its circumference is smaller and it's larger, so it has to cover
more distance than this one. Is it a doubt? Because उसको बोल रहा था एक बार. So like डाउट है क्या तुम्हें क्या तुम नहीं कुछ काउंटर क्वेश्चन हाँ उसको एक्सप्लेन करना था ना. so now so this got slower. In cycles, if you have ever noticed that we have a chain around it, so that it can maybe it can increase the speed so that by changing the gear mechanism, like when we change the gears, so there are smaller gears inside inside one bigger, like there are different sizes of gears. So through the gearing, like changing the gear mechanism, the chain shifts to another gear. So now maybe this circumference is smaller, so it has to cover a little less distance than this. So maybe it's covering 3/4 distance. Like this, we can repeat it by giving it more smaller. So maybe this is covering the whole round. समझ गए सब लोग You can understand. वो क्या कह रही है. यस ना बस वो इसमें तो जो ड्रिवन गियर है when it is bigger and when it is smaller, in which case the speed is more? When it's smaller, the speed is more. Like I can show you the other example, vice versa. Do not rub for your work. दिया नया डायग्राम बना रहे थे उसको मिटा दिया था उसी पे तो क्वेश्चन था. No, actually it's like now if we take the bigger gear as the driving gear, and smaller gear as the driven gear. So this is the driven gear. Now if we say that it's covering one round, इसको इन्वर्टेड रखो नहीं तो वो चलेगा. one round in 1 minute. So maybe now this one can cover maybe 2 rounds in 1 minute because it has to cover less distance than this. So this is faster. So number of rounds are more in 1 minute. Yes. How is the bicycle that is connected is faster because of that? Ultimately fast का मतलब क्या है हमें वो व्हीकल फास्ट करना है ना. जो जो ड्राइविंग गियर है वो भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है जितना डिस्टेंस ड्रिवन गियर कर रहा है. रोटेटरी डिस्टेंस. How is the cycle, how will cycle run faster because of that? Just think ना. Yeah. So मुझे जेन्युइनली नहीं समझ में आ रहा मतलब मेरा क्वेश्चन जेन्युइन है. ये मैंने research भी किया था. So I think like it's covering the same distance, but can you repeat the question? All I want to understand is ये गियर मैकेनिज्म से इनको जोड़ के साइकिल का स्पीड कैसे तेज हो रहा है. अगर जैसे ये जो ड्रिवन गियर है ये ड्रिवन गियर सपोज यहाँ पे एक बड़ा है और एक छोटा है तो तुम कह रहे हो आप चेन को जैसे ही छोटे वाले गियर पे ट्रांसफर करोगे आपकी साइकिल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगा. हाँ. Because like this the same thing because its circumference is smaller, so it has to cover a smaller distance than this one, though it's covering No, like डिस्टेंस इज द सेम दिया. ये लेफ्ट वाला जो गियर है वो जितना घूमेगा डिस्टेंस वाइज सर टेप लगा के डिस्टेंस नापोगे ना. ड्रिवन गियर भी घूमेगा उतना ही. ड्रिवन गियर भी उतना ही घूमेगा बस ड्रिवन गियर छोटा है इसलिए नंबर ऑफ राउंड ज्यादा होंगे लेकिन डिस्टेंस उतना ही. रोटेटेड डिस्टेंस उतना ही होने वाला है. distance would seem like if it's 1 kilometer, this would be 1 kilometer, but with more rounds. With more rounds. How is the speed increase? Speed का increase होगा. Number of rounds per minute increase हुआ. साइकिल का डिस्टेंस कैसे साइकिल स्पीड अप कैसे हुई.
समझ में आ रहा है क्या किसी को मैं क्या पूछ रहा हूँ? नंबर ऑफ राउंड्स पर मिनट स्पीड होगा ना, मेरे को समझ आ रहा है। तुम्हारा व्हील, जो साइकिल का व्हील है वो किससे कनेक्टेड है? वो गैस से, कौन से वाले गियर से? ड्रिवन गियर। ये सही बोल रहा है। अगर ये ड्रिवन गियर 2 राउंड्स 1 मिनट में 2 राउंड्स कर रहा है, और इस ड्रिवन गियर को अगर तुम व्हील से कनेक्ट करोगे, द व्हील विल आल्सो हैव 2 राउंड्स पर। ये ड्रिवन जो पीछे वाले होते हैं, दैट आर द ड्रिवन वन, सो वो व्हील्स कनेक्टेड है, बेसिकली दैट ओनली मूव एंड दे शिफ्ट, दे लाइक अलाउ व्हेन वी पेडल, सो दिस आल्सो द फ्रंट व्हील्स आल्सो मूव। हाँ, फ्रंट व्हील तो पुश के कारण मूव हो रहा है, ठीक है, दैट्स फाइन। ओके, सो यानी ड्रिवन गियर बाय व्हाट फैक्टर वो छोटा है ड्राइविंग गियर से, बाय दैट फैक्टर उसके नंबर ऑफ राउंड्स पर मिनट इंक्रीज हो जाएंगे, बाय दैट फैक्टर द नंबर ऑफ राउंड्स डन बाय द rear wheel of the vehicle of your bike will also increase, and that is the increase in speed. ये जो बोल रहे हैं ना नंबर ऑफ राउंड्स पर मिनट, हमें एक्चुअली में वही इंक्रीज करना है, वो इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस अपने आप तेजी से कवर होगा। And when there is a larger gear, the larger driving gear, it requires more force than when the smaller gear is the driving gear. Okay, why would it require more force? Because मतलब इन ऑब्वियस तो लग रहा है, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर ये गियर की प्लेट बड़ी है तो पैर से घुमाने में ज्यादा फोर्स लगेगा, जैसे जैसे बड़ा, तो ऐसा क्यों होगा? तो मास ज्यादा है, सिंपल बात है, इतना क्यों सोच रहे हो, राइट? जितना बड़ा मास होगा उसको रोटेट करने में उतना फोर्स लगेगा, तो इट्स जस्ट सिंपल मास थिंग। हाँ, पूछो, कुछ पूछ रहे थे। we can make a clock out of it, I think so. clocks में भी होता है, But मुझे आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर इफ यू कैन गिव अ लिटिल कैलकुलेशन आल्सो कि सपोज ये ड्रिवन गियर की, ड्राइविंग गियर तो फिक्स रखते हैं, ड्राइविंग गियर इतना ही रहने वाला है पैडल के पास। ड्रिवन गियर में, ड्रिवन गियर हमारे पास 2 हैं साइकिल पे, रियर व्हील पे लगे हुए ड्रिवन गियर, एक बिगर गियर एक स्मॉलर गियर। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि व्हाट आई वांट इज कि स्मॉलर गियर से, जब बिगर गियर से स्मॉलर गियर पे, ड्रिवन गियर से दोनों, बिगर गियर से स्मॉलर गियर पे जब चेन ट्रांसफर होगा तो मेरी स्पीड डबल हो जानी चाहिए। हाउ शुड आई डू दैट? बिगर गियर स्मॉलर गियर दोनों रियर व्हील पे लगे हैं, पीछे वाले व्हील पे, बिगर गियर दोनों ही ड्रिवन गियर है, बिगर गियर से स्मॉलर गियर पे चेन शिफ्ट हुआ, मेरी स्पीड डबल चाहिए मुझे, क्या करेंगे? कुछ तो ऐसे ही कैलकुलेशन होता होगा ना जब बाइक बनती होगी या चीजें बनती होंगी कि एक गियर से हम कितना चेंज ऑफ स्पीड चाह रहे हैं, कोई तो कैलकुलेशन होती होगी, ऐसा रैंडमली तो नहीं लगता। तीत के साथ कुछ के साथ होता है सर। हाँ, number of like the speed like number of if we take this gear first, so number, so suppose this is the speed and by this gear, so and then this should like this is also equals to the teeth, number of teeth that n1 n1 क्या है? n1 is the speed, नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट। ओके, no, this is the teeth, sorry, and this is that the speed. क्लैरिटी नहीं है तुम्हें इस चीज की जो तुम कह रहे हो। मुझे ठीक है, कैलकुलेशंस रहना दो, मुझे ये बताओ ना कि उसका बड़े बिगर ड्रिवन गियर से स्मॉलर ड्रिवन गियर पे चेन शिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे स्पीड डबल चाहिए, तो बिगर ड्रिवन गियर एंड स्मॉलर ड्रिवन गियर के सर्कमफ्रेंस के बीच में कितने फैक्टर का डिफरेंस होना चाहिए? बाय व्हाट फैक्टर स्मॉलर गियर शुड बी, क्वेश्चन समझ रहे हो क्या मेरा? So if the सपोज एक वैल्यू ले लो, बिगर गियर है ना, बिगर ड्रिवन गियर का सर्कमफ्रेंस है सपोज 10 सेंटीमीटर्स, मुझे स्पीड डबल करनी है, तो छोटा जो गियर होगा, छोटा ड्रिवन गियर, उस 5 होना चाहिए उसका। क्या लगता है गाइस, उत्सव ये बोल रहे हैं सर्कमफ्रेंस हाफ करेंगे तो स्पीड डबल हो जाएगा? सर हम तीत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। सर हम तीत भी हाफ कर देंगे।
टीथ हाफ कैसे करेगा उसके लिए And टीथ का हाफ टीथ like का साइज चेंज हो जाएगा फिर उसमें टीथ and हाफ। like हाँ if suppose the gear is of 30 mm, if we take it of 30 mm, सर्कमफ्रेंस। yeah, so the teeth should be a multiple of it, or if we नंबर ऑफ टीथ। yes, the number of teeth should be a multiple of it. If we take like a number that is not divisible by 30, like we can take 4, so like maybe it would be till one number, then we can't have half gear or one fourth हाफ gear. टीथ। Yes, half teeth, sorry. So it should be the multiple of it. The circumference, एक्चुअली तुम फैक्टर बोलना चाहती हो। the number of teeth should be the फैक्टर ऑफ factor of. सर्कमफ्रेंस शुड बी द मल्टीपल। हाँ. तो ये बात समझ में आ रही हो क्या कह रही हो? अगर अगर टीथ साइज सपोज टीथ साइज 2 मिलीमीटर का है तो 2 मिलीमीटर का टीथ 2 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, 10 बार आ सकता है, लेकिन 12.5 टाइम्स नहीं आ सकता। तो सर्कमफ्रेंस जो निकलेगा दैट That विल should be ऑलवेज the बी दी मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ टीथ, हैज टू बी। समझ पा रहे हो क्या? मल्टीपल ऑफ द साइज ऑफ वन टीथ। Size of one teeth. ठीक है। एनीथिंग गाइस किसी को कुछ पूछना? How is the gap between the triangles of the teeth of the get calculated? Right now, I don't. गैप कौन सा होता है उनके बीच में? Gap ये जिसके इनकी अंदर एक और ट्रायंगल width. फिट होता है, वो जो गैप है वो सर्कमफ्रेंस पे नहीं है। पता है? वो अलग से और गैप क्यों कैलकुलेट करना है, नहीं समझा। गैप ये जो ये बोल वो तो आप जब टीथ डालोगे, मतलब when you put on the teeth, तो गैप तो अपने आप आएगा। फिटिंग गैप तो अपने आप आएगा उससे, क्या पूछ रहे हो? तो एकदम परफेक्ट फिट नहीं होता। परफेक्ट फिट होने से तो लॉक हो जाएगी ना पोजीशन। परफेक्ट फिट नहीं होता? लॉक हो जाएगी पोजीशन उससे। हाँ यार दिया, इसका मतलब ये है कि अगर इसका जो ये गैप है और इसमें ये जो ट्रायंगल फिट हो रहा है, अगर ये परफेक्ट फिट हुआ ना तो ये मूव निकल नहीं पाएगा इससे। इसको ये सोचा नहीं था। हाँ परफेक्ट फिट वो टीथ रेशियो के लिए होता है, वो टीथ रेशियो और साइज उसी से ये कैलकुलेट करता है वैसे। हाँ यार तो मैंने हम सोचा लोगों ही ने नहीं। डिस्कस तो किया था, भूल गए क्या? क्या मैंने बोल दिया? रिसर्च और क्वेश्चंस किए थे उसमें भी ऐसा उसमें नहीं है, मेरे को ध्यान ही नहीं, मैंने डाला ही नहीं, बट ये सही बोल रहा है। अगर परफेक्ट फिट होगा ना तो जैसे ये इसके पीछे परफेक्ट फिट हो गया अगर, तो ये मूव नहीं कर पाएगा घूमते नहीं वक्त। हो तो इट हैज टू बी समथिंग लाइक दिस कि वो ऐसा मूव कर You सके। can see. I'll show you the other case. If you can see that here also it's not a very perfect fit. It has a 1 millimeter or something like that, a little gap in it between the teeth. तो वो गैप कैलकुलेट होता है पर्टिकुलर वे में कि सो दैट इट कैन मूव क्विकली आउट ऑफ इट आल्सो। आई नेवर थॉट ऑफ इट। Actually, that one makes sense too. Because अगर Will using other shapes of teeth instead of using triangles for teeth, if you use square or circles, so will it increase or decrease efficiency? Will something else happen or will the same thing happen? I think the same thing will happen एनीथिंग? because this will also fit the same way as the triangles fit. I don't think so. सर्कल में हाँ, नहीं break हो होगा। जाएंगे उसके पीछे। सर्कल और आई स्क्वायर थिंक वो जो स्क्वायर के केस में वो जो साइड में उसके कोने आएंगे ना, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। वो break हो जाएंगे। प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, ऐसे वेगली बात करके होगा नहीं। ठीक है। सर्कल फिट Maybe I don't think it will fit, but maybe we can see it by making a shape, like with this kind of a shape we can make it on a cardboard and try it. एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना है? ना तुम कुछ कह रहे थे ना? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? ओके, यू वांट टू आस्क?